नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में गट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर आधारित एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। इंडियन हेरिटेज सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंतों के स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर द 4G कोड टू गुड हेल्थ नामक एक पुस्तक भी लॉन्च की गई, जो स्वस्थ जीवन शैली के मूल्यों पर आधारित है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और स्वास्थ्य को लेकर अपना अनुभव साझा किया। So the message is very clear that all the scientific studies which our ancestors had done was considered voodoo, and it's only coming back to us. The deeper the science goes, the deeper reasoning is happening, and we all start to appreciate that the food and the diet and the body types which are Ayurveda recognized, the science has started to recognize the same, and the scientific evidence is being gathered around that. So the message is that when Prime Minister gave a call for Shriyan or millets, there was a scientific reason behind it. For gut health, we've all been eating and drinking kanji to both the North Indian way and the South Indian way. We've been eating fermented food, the idlis to appams to everything else. They all have a scientific basis. Let's take pride in our food systems. Millets are good for environment and sustainability. All the arid and semi-arid land can be utilized for growing millets for long-lasting properties. These are nutrient dense food, so low glycemic index. So I think enough reasons to shift our food from the wheat, etc., which is what we end up eating, to millets, and keep adding that as part of our food bowl or food basket. लगभग पूरे दिन चले इस इवेंट में अलग अलग देशों और भारत के विभिन्न राज्यों से पहुंचे जाने माने स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट ने गट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर जहां मिलेट्स के महत्व पर चर्चा की गई, तो वहीं फल फूल और सब्जियों में छुपे स्वस्थ जीवन के रहस्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। यहां फर्स्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने कैंप के जरिए बताया कि फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कितना आवश्यक है। तमाम लोगों ने इस टेस्ट पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे जितने बॉडी के अंग हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, गट के थ्रू यानी हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू, हमारे आंतड़ियों के थ्रू कंट्रोल करे जाते हैं। सब जगह कहा जाता है कि मेरे गट फील ये है, गट चैलेंज ये है। तो हर चीज़ कई सदियों से कही जा रही है। अगर आप हमारे वेदों में भी देखो, हमारे पुराणों में भी देखो, हर प्रकार से अपने शरीर का अति आवश्यक अंग हमारी आंतड़ियों को माना गया है। तो उसके द्वारा काफ़ी क्या बहुत सारे बाकी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कंट्रोल करे जाते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस अति आवश्यक है। लोग समझ पाएँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी, हमारी सरकार ने भी इस साल को ईयर ऑफ द मिलेट बोला है, जो बोला है कि काफ़ी ऐसे ग्रेन्स हैं जिन्हें हमें ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। उससे हमारी इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन कम होती है, उस करके हमारी हेल्थ बेटर होती है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ को फ़ायदा होता है। So, not specific to this test, but overall today's conference is exchange of great ideas with experts from all over the globe. We've learned a wide variety of things that we probably knew very less about before. Also understanding inflammation in your body, what is the root cause of that inflammation, even if not the root cause, is it the fuel on the fire, to understand that and then to take action, modulate your diet, modulate your lifestyle. I think the gut is not called the second brain for no reason. And keeping that in mind, we should certainly learn more, respect our gut, and do everything within our power to have a healthy gut, because that would translate into a healthy and longer life.
The message of the conference is that all disease begins in the gut. It doesn't matter what the disease is, if it's cancer or diabetes, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, all disease begins in the gut. That if there's one thing you're going to do to be healthier, it's learn how to build a healthier, more diverse microbiome, the good bacteria. The science tells us only 1 person out of 8 has stomach problems from wheat. The other 7 out of 8 have brain problems, they've got brain fog, or depression or anxiety, or they've got joint problems, or they've got skin problems. They don't have gut symptoms. Now 2023 was declared as the International Year of the Millets. Millets, we had forgotten about it, though we have 5,000 years of history of millets. But since the colonial powers came into play and the Mughals came, millets disappeared as a crop, and we focused on wheat. So the focus is the important role of millets plays in gut health and lifestyle disorders. The number of chronic inflammatory diseases is going up rampantly. Diabetes, there are 106 million diabetic patients in the country right now, and there are 315 million obese people, and there are 215 million blood pressure patients in the country right now. And a lot of it is to do with the low-grade inflammation which starts in your gut. Every individual is different, and हर एक की वित्री पवित्र हर एक का environment फ़र्क है. तो what we do is we try and analyze each person individually through artificial intelligence. Using artificial intelligence, we try and understand at what level the metabolic dysfunction is happening, and then for that particular person what is right, what is wrong, we recommend, and we are getting fabulous results. आपको कोई प्रॉब्लम है और हम बोल रहे हैं कि खाने से हमें गुड हेल्थ भी मिलती है और खाने से इल हेल्थ भी हो सकती है, राइट? तो अगर आप फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है. फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड ऑल द टाइम ऑन एसिडिटी कंट्रोल मेडिसिन्स और बहुत हेल्दी डाइट, चाहे हम अब मतलब मिलेट्स की बात करें या अपना घर में उगाया हुआ खाने की बात करें, वेरी हेल्दी डाइट, राइट? बट he used to have an apple a day, keeps the doctor away, right? और जब फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराया उनका पता चला कि उनको एप्पल से इंटॉलरेंस हो रही है. मुझे याद है जब पिछली बार जब ये इंटरनेशनल सिम्पोजियम हुआ था तो यहाँ पे डॉक्टर नीरज ने हमारा ये टेस्ट करवाया था, और ये कहीं बाहर से जर्मनी से कहीं से इसकी रिपोर्ट आई थी, आई रिमेंबर दैट. तो उस वक्त मुझे पता चला था कि आई एम एलर्जिक टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. तो वो मैंने उसके बाद में उसका ख्याल रखा, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, Oh, I think it's terribly important because we assume just because other people are eating certain things that it's perfectly all right to eat the same things. But what we are not recognizing is that each person is different. They come with a different set of genes, they come with a different set of lifestyle, they come with they're basically different machines. Just because, not all cars are the same and not all humans are the same. So it's terribly important for us to understand what we are intolerant to. And the intolerance doesn't show itself that minute. Intolerance takes time. So it builds up, and then you're surprised. So why allow yourself to be in a position of surprise when you can actually test for food intolerance earlier? देखिए, यही कहना चाहूँगा कि गेहूँ हमारे देश का अनाज नहीं है, गेहूँ खाने के लिए बना नहीं है, ठीक है ना? पर गेहूँ बहुत एडिक्टिव है. जब खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. वो मज़ा इसलिए आता है क्योंकि जब वो जाता है तो हमारे पेट में गर्मी करता है और हमारा शरीर अफ़ीम बनाता है उस गर्मी को शांत करने के लिए. अफ़ीम खा के सबको मज़ा आता है, तो इसलिए सब लोग गेहूं के आदी हैं, पर वो बना किसी के लिए नहीं है. तो हमें अपने देश का अनाज वापस से अपनाना है. जो हमारे 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, श्रीधान्य मिलेट हैं, और 3 न्यूट्रल मिलेट है, जवार बाजरा रागी, उनको अपनाएं और अपने वातावरण के लिए भी अच्छा करें, क्योंकि इनको उगाना
और सस्टेन करना जो है उसके लिए पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए। और दूसरा आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है, हम मरीज़ों को ये कहते हैं कि जो श्रीधान्य मिलेट खाता है वो बीमार होके दिखाओ। So this conference and this topic conference is very, very important, especially in today's scenario, because nowadays our gut and our lifestyle is very, very bad, and that leads to so many diseases. As we all know, medical science has developed so much, but despite that, we're still lacking behind. We are having so many unresolved questions, unresolved diseases, which is not responding very well to conventional allopathic practices. So that's why we need more insight how the gut works. That's what our ancient science of Ayurveda says. So we need to be more focused on how improving our gut health can actually lead to significant improvement in our health and in our immunity also. बता दें, मानव शरीर में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका संबंध हमारी आंतों से होता है। आंतों का खराब स्वास्थ्य न सिर्फ शरीर के तमाम ऑर्गन्स को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक रोग भी पैदा करता है। लिहाजा शरीर की तमाम बीमारियों से बचाव के लिए आंतों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और आंतें तभी स्वस्थ रहेंगी जब हमारा खान पान और जीवन शैली बेहतर होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।